of surveillance of their family will be at the higher side. This is what it has been already given by the scientists in the present era. This is dedicated site for such type of settlements. And this is one of the important things. See, we simply discard our own ancient literature. But already our literature has given that on this earth, at that time, 5,000 years back, they had given that on our earth, there are 3.4 billion species existing on this earth. That's why, you know, the famous line, 84 lakh yoniyon ke baad manushya ka janm aata hai. Now, if you're developing biology or embryology, definitely such type of things. Have you ever thought about that? That already our ancient text has given the number of species at that time. So presently, still we are confused whether it is 6.7 billion, 8.7 billion. We are simply using the statistical, approaching our presence of the species. But at that time, exactly how they classified, only classify the species on the present basis. But earlier they used to classify. Still the classification is going on. Still the development is taking place. But 5,000 years back, our literature has already how beautifully they classified all species. This is how the Islam is famous for Vishnu is 29 commandments, and out of that 29 commandments, we are having 11 commandments directly related with the nature and environment protection. So in even every area of the world, I'm not talking only about why I'm giving the most of the example Rajasthan because in the different parts of Rajasthan. Also. So my first issue is simply, now yes, this is very important. Definitely how the universe has been developed. If we've been using such type of term now, so we just get attached with some political ideology. But this is the photograph, original photograph which I had taken from the Germany, Salzburg Museum. Now already there is a dedicated museum how the universe has been developed by the vibration. And here what the sonographs you can take. That's why presently our new scope for the green enterprise is sonotaxonomy. Now you can use the sound to classify the animals. So that could be a new aspect for the green entrepreneurs. So you can even developing that. So already a few of the works are going on toward the world about taking voice or sound as sample to classify particular species or to identify the species. But already there it is. So let's think of our side also. And these all are the provision. Number 3 is very important. You can get associated with the WCGP, a governmental organization, as well as NGO, ERN, WTI, IFW. So you can get involved if you are interested in natural heritage or wildlife. My focus is basically environment and conservation because I am conservation biologist. That's why I am mostly focusing my lecture, my green entrepreneurs or entrepreneurship of these aspects. So third is very important for all of you. You can get joined with that. All the green entrepreneurs should get associated with these organizations. This is what our constitution is giving to us. And these are different laws. So we should be very well versed with our laws also. If you are taking natural heritage as the theme of your whatever the entrepreneur you are going or whatever the business model you are creating. So if you are knowing about these things, then definitely your success will be more. So what we are using, we merge this ancient as well as modern things, and then we develop our approach. So bottom up, taking the advantage of the local such type of ownership, and then we started. And what focus beneficiaries are with us. Keeping that thing in mind, right now I am sharing the knowledge with you. You all are academicians. You are all from some academic institutes. So that's why my focus is here to give you the academic or intellectual knowledge. But when I am dealing with the villagers, then my approach will be completely different. There I can't show all such type of theoretical aspect or technical aspect. They are only what they are doing. I have to learn because they are much more advanced than me. So first I simply learn from them, and where they are getting the challenge or problems, then we start working in this direction. So that's how our approach works. This is how we are working in our direction, taking grassroots
cause for that particular challenge, converting it into opportunity, and then we are developing all these things. So you have to explore the opportunity. First of all, you identify yourself in which aspect you are interested. What is your strength? What are your weaknesses? And then skill yourself, your particular strength, and then go for the target stakeholder, whether it is a site targeted or some human targeted or other life forms targeted. It depends on you. And then just work in this direction after identification with your aims and concept. Plan that. Skilling of local residents as well as yourself and youngsters. So you have to take the second minus every time. So what we did, we linked the formal education with the applied arts. Then we created a lot of awareness and about the local heritage in every term. All these three terms: constitutional, financial, legal, everything, all such awareness. Yet, and we use the customs and traditional knowledge of that particular area. We learn about that, the social dynamics, the socio-cultural aspect, and then we started working in this direction. So how we did, and then our approach was complete. Earlier, we were completely ecological focused. We were focusing that no, we don't want the humans to interfere in the ecological trade. But when we realized that human is a part of that particular ecosystem, then we changed ourselves. Then we took that community-centric approach and then started economy and then product. So this was the earlier theme, and now we are completely on the community-centric approach, and now we are getting the eco-centric research. So this is the win-win situation. We want to protect and conserve our natural heritage, and the target beneficiaries, they need money or livelihood options or income generation. So this is the single line or different words that are simply compiled. Now see, nature-based community they link different type of. All these are the open opportunities for the green enterprise or any business model. No, beyond this, you can go in there. Tourism is one word. So don't only think of the tourism. You also think of the other aspects associated business model with the tourism. If you know you are not going for the tourism purpose, then also if any person visit at your place, he or she needs something like basic infrastructure to stay, to sustain or to for food for eating. So all businesses associated with that visitor will be the opportunity for the green enterprise. This is what the technological field I had given. That these are the open right now opportunities which we, while working in our area, we faced all these. So Google development, when we planned, we gave the model, then this is the open opportunities for all the technology, all the persons who are interested in such type of aspect. So this is what you can go in this direction. This is required for the green business. You can go and develop this. So let us see what we did. So this is at the individual level. When you are working at the individual level, then success is in your hands. You are not dependent on others. If your model is good, if your approach is good, your objectives are clear, definitely you will be giving a model. So here, what we did, we managed the water. So complete water management was a focus thing, and then plan and design accordingly. So what we did, this is what very close to Kopargaon. This is here your time. One of them. Here the issue was in this particular whole of the locality, it's not the single model. Here the issue was water, physiological dryness of the water. Means water was not available. Even the physical stress was there. So physical as well as physiological stress were there. Surface water was almost out from Bharatpur, due to human interventions. The three rivers are now no more. They are being either checked by dams or due to a lot of interventions in their upstream area. So now the Bharatpur is not receiving. And simultaneously, the Bharatpur once used to be the flood-prone area is now almost dry. Now it is a drought-prone area. And the TDS of the underground water is also, you can see, 20,000 plus. So taking this this particular challenge as one of our opportunity, we created this model. And then we did everything, whatever the interventions we did. And then the result is in yellow, you can find here. So this is what we did. Right now, I'm not showing the videos of all these things. So first, what we did, we managed the water. Both surface water as well as underground water, from where it is coming. Every drop of water need to be conserved if we want to overcome this challenge. And this is how we did. See outside.
climate change impact in mind, whether monsoon is going right, it is in the same average conditions or they are going down, precipitation is not up to the level, everything, all the aspects we had taken considered while forming this particular model. This is how we managed all the plans. It's a simple thing. It's nothing new, nothing new. It was simply the idea to give the model. See, not a single drop of water is going out from this campus. Everything is getting inside. Even the wastewater, you used to say the black water or grey water, these are being treated again by the natural waste. It's not the mechanical aspect. No mechanical aspect has been considered in this while creating this particular model. This is what we did, landscaping. Now see here. So all the pictures, 3 pictures from the angles, same angle, left hand side, 1 picture, same angle. Now see what is the present condition. Here the people used to say that no plant will survive in this particular terrain. But now from greenery you can assess that what is the situation. Right hand side, lowermost corner you can find here. See the greenery. From the same angle when it was constructed, and then today what is the scene of this area. This is how there is a zero waste. Although it is a zero waste, we are saying that zero waste, we try to utilize even the plastic waste with us. So zero waste means whatever the biodegradable, we reduce the use of such type of non-biodegradable aspect. That's why in this campus, we are not getting the such type of waste. And if we are getting such type of waste, then how it is, if recycled, then how in the proper way it will be recycled. So that is we are following. That's why this campus is having zero waste solution. This is how biodegradable waste is going out. And this is the green entrepreneurs. People are now using their particular wastage because agriculture is, the rural side is very great producer of such type of biodegradable waste. So this is the opportunity. This is the opportunity for it. This is just a model. That's why we have created only small, not the bigger. And this is the diversity of the area. Now you can see here. This particular 50,000 square feet area, 3,000 is being constructed. See the biodiversity plot. The 150 species are now thriving there here, floral species. And we are having 134 types of birds. And we are having something around 20 plus birds which are nesting. The house sparrow, the 22nd generation is now flourishing here. Over 200 sparrows are there residing in this particular camp. And we are having almost some 10 types of snakes here. And we are having some 4 to 5 types of animals here. We are having lizard. We are having over 30 types of butterflies in this particular campus. This is even something around near about 10 types of spiders we are having here in this campus. So this is the opportunity, and see how the people are coming here to visit here from every sector, tourism sector as well as the management sector as well as some technical sector. So you will find, and even we are having the foreign collaboration. So how the foreigners, they are coming here without using the mechanical approach, how we have created this, that you can even cope up with the adverse condition which are outside. If we are finding some 50 to plus outside area temperature, then inside you will find something around 30 to 35 degrees. Similarly, if you are having something around 0 degree below temperature outside area, you will find something around 50 to 20 degrees Celsius within this particular building. So how it has been created? So even the civil engineers or architect, designer, they just come here. This is what the sustainability we had given. So all the aspects are being taken, due consider. In this campus, in this particular area, such type of business models are being developed, and the youngsters are being trained at every level, so that at least they can get the benefit of what they can do and how that could be given to the international platform. This is how they are being trained. This is the shown. So now go for the community. So similarly, water centric. So the issue was water. So here, at individual level, everything is in your hand. But when we are talking about the community level, then definitely it depends on initiatives and ownership. Means you have to conduct a need-based assessment as well as RCA. So root cause approach just to identify the root cause. So here the root cause was water stress condition, water scarcity. So that's why we gave the term water-centric development of that particular
immediate area. And then we took the initiations, we planned, and then we executed. So this is what the models we created so far in Rajasthan. So it's a socio-ecological model, and the punchline is conservation practices for sustainable livelihood. So that's what already very individual level already I mentioned. These are the four aspects, different extreme areas which are being considered. And right now already one of my friend is here. So we are developing just about the Kopargaon model. Still it is going on. The RNA. Very soon you will be finding in my slide the new campus which are the example for all the green tuners. So this is our model. This was bird. So here the trappers used to trap this bird and sell it 50 rupees in 2002. So we simply said that why you are trapping this bird. So we simply trained them in modern things, because that 50 rupee pair bird was sold to the Ahmedabad market, which was having the 500 rupees per pair, and from Ahmedabad Mumbai market, where the cost was 5,000, and international market it was 50,000. But when there was legal action taken, then definitely these poor families, they were trapped. So we said that already you are having the talent, you know how to travel it, you know the cause. Simply you should know about the scientific name and the ecology of this bird. Let's start. And we use this, Chalat the song from Rajkumar. We use this always also, which was widely sung by the street singers in UP or North India. We use this, and how beautifully, now see the result. Our approach was simply because it is a global threatened species. We achieved our result. Now, there at that time, the number was below 400, something around 300 something in 2002-3. And presently, in 2020, we are assessing 2,000, but Forest Department claimed that it's over 6,000. So that is the importance of such type of green business. What we did, we simply trained them. Already they were, I will not say that trained them, they were having the skills, they were having the strength. We simply value added their knowledge with the modern perspective. And now they are saviors, not the trappers. And the local administration, see in 2019, they had taken this board as their mascot. And now every person of that particular district says that this is our board. So this is the change which we can bring from the green entrepreneurship or environmental entrepreneurship program. This is one of the examples which was focused on bird. And other example from see here. Kevla Dev was the focus in 2007 when I was shifted here for Kevla Dev. Then we started working for different rural areas just to overcome the human wildlife. But conflict was not human wildlife. There was simply the conditions of water, because the people used to say that you are arranging a lot of things to the Kevla Dev National Park, but why not for the human community? So that was the issue. Then we started intervening. See, with the help of CSR, Bharat Petroleum, how we did intervene with all these. These all are the scientific data and everything. Very quickly, I will be skipping. I will not go in the technical details, how we intervene, the structural or civil works, everything. We use the civil works structure. Reading the case study of one of the this, I will show you another aspect. What approach we had taken. All these aspects. All the data is given there. So, Dr. Konda, you can share the slide if anyone is interested. They can just use this. We maintain all the documentation. So this is one of the models for the safe water-centric. So here our focus was to conserve the habitat, and water was the important aspect. So revival of the ecological profile was the idea. So this is one of the villages from the villages which already we had taken here. So see here, very close to Kevla Dev National Park, and the structural and civil work already we did. We had what we did mentioned here. But after social intervention, see the change is took place. Greening the grey, what they lost. Why? Because they realized, the women realized that we are losing something. Already it was the talent, the strength of them. And North India is famous for such type of moons art, grass artifact, Sakura Moonja, you all know. So simply we value added that and linked it on the global platform. And today, whatever the demand is there, it is high demand and production is very low, because now they realize that what they lost. Because these particular grass, particular influence part, particular soft leaves, the blade, are only being used to
manufacture such type of, produce such type of, artifacts. And that is only collected after monsoon. Only month period is there. So throughout the year, very few raw material is getting. Otherwise, earlier there used to be a very great dominancy of these gases, but we lost them, and that's why we lost. Porosity has been out. Now porosity is out. Water holding capacity is there. It is not percolating in the ground, and groundwater is already getting out, and the upper surface water is not coming due to stoppage of the rivers as well as the less rainfall. So every step is your opportunity to develop your own team of businesses to work in this direction. This is how the government is taking advantage of such type of intervention. And now see how these women were transformed. From that particular glass artifact, they said that now we know that you already given now we also want more income. Now, if you want more income, what do you want? You want to make something new. So they started working on the traditional sewing machine, and then the sewing machine traditional work changed into the modern high tech. Now see, modern high tech machines, for the change it has been made 3 years. So presently, in this pandemic period, our villages were only the villages where not a single penny was cut down for our team as well as the whole of the area. We are getting a lot of money in that time also, because we realized the senses of the people that now there is a need of masks, and we started in Feb 2020 creating the mask. Single layer, when no one was knowing about the double layer, we started making that. Our women, these women who were trained. So see the transformation. So such type of opportunities, it's up to in your hand what interventions you take in this particular time, how to cash it and how you can develop your business model. And everything is being scientifically documented. If you want to go through all these aspects, you can just read in all these websites or everywhere. So everything has been documented scientifically. So you can even go through it. And same is the Dolpo. So very quickly I will be, same is the Dolpo model. See how this was a 2-3 hours Nala. What the structural intervention took place. Underground water was checked, and see, upper flow was not checked, because we know the result in Bharatpur. So that's why, keeping in this mind, see the change. Nala is now the river, real river, for 11 months. And now the horizontal percolation is taking place. The whole of the area, now climate change aspect has been considered for this area. 4,000 hectare land are under the indigenous vegetation revival growth. And how, see, these all are the technical data. How we transfer the ownership to the people. This is what the transparency, this is what the transparency, this is how the involvement of people. And the basic small issues, now they are being focused and now they were overcome. Digitalization, use of renewable energy resources, plantation drives, the Batla party, Killer party, they are using all these things. They have taken the now these they had adopted their plantation. So climate change aspect are being considered for this area, and lot of interventions are going on in this area. After simply resolving one issue of water stress. And this is what the corporate institutional, this is few of the examples from the development, because what they need, they also need something like the remedy for their pollution, whatever their industries, their business are creating. So this is also a pure option. So this is again the nature base, the same feedback concept. So we are using this, and this particular is natural solution where we see you can in the middle the difference between the black water and the water after you getting treated with the biodiversity. All the numbers and everything has been mentioned here, even in the society. This is one of the largest treatment system of the world in Africa, where we were the part of this, and how we planned is a petroleum company in South. Right now it is South Sudan. Earlier it used to be only Sudan. So how the problems were overcome and how the new forests were developed, you can see from all these aspects. This is one of the important place where waste management solid waste could be developed into something good. See the right hand side. Now it is the hotspot area.
And this is what the few other interventions which are going on. This is not done by us, but this is I am giving from my teams, where I am associated with. So how they are developing such type of green jobs experience here. So this is of right now for urban people. This is in much demand. So you can develop your green businesses on this particular soil-less cultures. This is what right now after pandemic it is much demand. So in Rajasthan there is har ghar aushadhi pauda. Every house should have the three important medicinal plants. So they are freely distributing. So from last 3 years it's going on. So you can also start in your state here or your village or your municipal area. You can take the example. And this is very important because documentation is very important. How the new generation are being certified. Yeah. They are not like you people getting the knowledge from high degrees, but they are being practically involved in their areas to conserve the biodiversity, as well as it's the open opportunity for all of you to get involved. So these all are small interventions which our team are working on the grounds practically. This is what you can go here. Very high given you. This is very important website where you can find such type of interventions. So ultimately for green businesses, you have to deal with the local natural heritage as well as local traditions to get the success. So for entrepreneurship people who are interested in developing their business, you should get all the innovative ideas from your own surrounding, from your own culture, own customs and traditions. So here I will end my sharings. So again, once again, over to you, Dr. Fonda sir. I am ending my. Thank you so much, sir, Dr. Mehra sir, for your enthusiastic talk and your precious knowledge. On behalf of Kopargaon Taluka Education Society, continue, sir. 1 minute. Sir, Satyaprakash sir, I have a question actually. Yeah. I would like to ask, in our local area, how we can start our small startups with the help of the conservations? Can you elaborate? Yes, the most important thing is that first of all, you just identify the potential, that particular challenge, what I had mentioned in my presentation. What is the challenge of your area? If you are dealing with the green aspect, then what is your local natural heritage there? What are the local customs which are having the association with such type of local ecology of your area? Then associating with that, and then you just find out which type of their trade or skill of the community could be well developed into the business model. As I had given the example of that grass artifact, there water was the condition. So the people, they said that water is our issue. When we resolve the water issue, then they said that we are having a lot of time. Then what is the skill? What they can do? The women said that we used to make such type of utilities at our home. We said, okay, if you are making such type of utilities, but the urban people they keep such type of utilities as their artifact. Is it possible for you to just sell these articles? They said that it's costing just 10 rupees. We said, no, it's not the 10 rupees. It's something like hundreds of rupees worth for the people of urban areas, because maximum economy is there. So they were shocked. Then they started, whatever we value added to their particular strength, that, okay, now the demand is for this particular artifact. Now make this artifact. This is what I had shown here is not a single day thing. It took almost some 5 to 7 years to reform all these aspects. Yeah. So you have to simply identify such type of potential of your area or scope of that area, and then you take. If you will see that whatever I am saying, or you had what I shared, it is not that the same thing you will replicate, but the principle will be same. Principle will be the same for your area also. Identifying that particular challenge, and then creating the opportunity from that same challenge. That is how you can do. So whenever I can't comment in your area,
when it will take time, or whenever I will be having the visit, then definitely we can visit and we can search out the explore such type of challenges, and we can work in that. No issue for that. Yeah, over to you, sir. Konda sir, please unmute. Sir, hello. Yes, now it is audible. Hello, sir. Prakash, sir. Yes. For that purpose, have to take the have to form NGOs or have to take permission from the government? No. It's depend on you, because you are the academic institute. So if you are having the engineering or management base, then even AICT in UBA, Unnat Bharat Abhiyan, there are some funds available for the startups. Or you can even collaborate with IITs. So already I am the part of UBA also. So in Unnat Bharat Abhiyan, you can create your own ideas. You can even, because UBA time to time conducts such type of workshops. If anyone faces any issues, then in their area, they used to send the team, okay, go there and explore the opportunities. So we do the field work. So even I had visited several such type of areas on behalf of this UBA from NITR Chandigarh. I'm resource faculty for NITTR also. They are the part of this Unnat Bharat Abhiyan. So we used to visit that area and then explore. So there is no need of NGO. There is no need of any such a base. If you started, then you can develop your own from academic level, individual. That's why I had given you the individual level interventions also. I had given you the corporate also. I had given you simply the community based also. So village panchayat already, if you will find that CBD is important, Convention on Biological Diversity, you have to maintain the biodiversity registers in your area. So in already the funds are available. The National Biodiversity Authority is there to give you. But I think in India right now, only Kerala is the state where such type of registers are being maintained. So you can develop the biodiversity of your particular village area, which has been adopted by you or your institute, and get the fund, mobilize the funds from the state government or local governance to utilize that, and you can involve your youngsters. Okay, let's explore this. You can use your skills, means whatever the faculty. If there is zoological faculty, go for the faunal diversity. Botany, the floral diversity. Geological, and arts faculty, go for the social customs, traditions, sociological aspect. So ecological, sociological, and even the economical. So that all together means diversity. Ecosystem is stable only when there is the diversity. And your model will be stable only when there will be the diversity. So explore such type of things in your area. No need of any base. You own individual level can also start in this way. Even your chemistry field, the green chemistry is the vibrant field right now. Which type of plants are there? Take out the alkaloids and get it done. Because in Rajasthan you will find Chaitri Gulab. So that particular rose in Haldigati, you heard about Bhana Pratap, everyone knows about Bhana Pratap. That particular area is famous for the rose, and that is only grown in this Chaitri, this April, March, April area. And that perfume or their essence are now exported. We can't purchase that. 10 gram cost 1 lakh plus. All of the villages involved in such type of program. Similarly, Molela village is involved in the terracotta. So such type of lot of examples. I have given only few of the examples, interventions where my direct involvement is there. But otherwise, lot of examples are there where anyone can take out from any base. And then you can even form your NGO either in Society Act, Trust Act, or the Company Act, or you can even develop your company for the profit, and you can go for that businesses here. Yeah. Thank you for suggestion, and I'm very happy to say that even our College of NSS and that UBA Unnat Bharat Abhiyan 2.0, we are actually doing the same work here. So with this, thank you, sir, once again. Over to Pandit sir. Thank you so much, Dr. Mehra sir, for your precious knowledge and enthusiastic topic, which really encouraged me all us. On behalf of Kopargaon Taluka Education Societies, PJ Somaiya College, I really thank you once again. I would like to invite respected Dr. S.G. Konda sir to introduce another innovative speaker to today's webinar. Please, sir, over to you. Thank you, sir.
Hello, I'm audible. Hello, I'm audible. Khandidhar sir. Yes, yes, you are audible. Yes, you are audible. Is there Sharad sir? Yes, yes. Thank you. Thank you, Khandidhar sir. It's my actually, I'm very glad to introduce today's another resource person, my friend Dr. Sharad Pasle sir. Actually, he is a very innovative and very cool person. I'm very happy to introduce my friend Dr. Sharad K. Pasle. He has completed his BSc from Dayanand College, Solapur, Shivaji University. MSc from Maulana Azad Research Center, Dr. Baba Ambedkar Marathwada University, Aurangabad. He has completed his PhD in 2014 from Department of Chemical Science and Technology, University of Rome, Italy, under the supervision of Professor Giao Paradossi. In 2014, he has completed his PhD, and after that, he has joined as an assistant professor. He has 7 to 8 years of experience. Presently, he is working as an assistant professor in chemistry, Thakur College of Science and Commerce, Mumbai. He has published many research articles and research papers in various reputed international journals, having the impact factor more than 6 impact factors, such as reputed journals are there. As we know, there is in chemistry publishers SES elsewhere and the RSC, European Journal of Medicinal Chemistry, European Journal of Polymer Chemistry, Macromolecular Biosciences, Biomicromolecules, and the Bioorganic and Medicinal Chemistry. These are the reputed journals in the field of chemistry, of medicinal as well as applied sciences. So he has published many papers, as said in the reputed journals. He has received many awards. Here there is a list of awards are there. For a span of time, just I will highlight some short highlight awards of he has received. He has received award of Academic Excellence Award by International Association of Science Impact in July 2018. He has received Best Teacher Award from Lokmangal Bank in December 2017. He has awarded Best Oral in New Horizons in Chemical Sciences, which is organized 23rd December 2015. He has awarded Pride in Higher Education at Alumni Meet of in 2015. And also he was awarded Best Oral at Nanoscience in 2014. And this is one of the best highlighted. His work has been highlighted as a cover story on ISIS homepage, which is of Oxford University, UK in 2013. Also, he has received Best Scholarship Achiever in Higher Education 2012, and many more awards he has actually received. So there is a lot of awards are there, even in the school, college, in the schooling as well as in the college life. He has also received the best, you can say, intercollegiate essay competition award under again under senior officer of NCC cadet, that is battalion of 38th Maharashtra Battalion of Solapur, and he has received winner of international PhD fellowship, that is MIUR, Ministry of Italian Government of India, Government of Italian in 2011 to 2013. So as there are many list of awards are there. Also he is a Chief Executive Officer of Center for Invention, Innovation, Incubation, as he worked in the Arab Sir. He is the editor of, publisher of Skylight Publication Pune, Chief Guest Editor of Special Issue, Trajectory and Science Technology Research Journal, member of Editorial Board, International Journal of Research, International Research Journal of India, International Multidisciplinary E-Journals, many more. He is the reviewer of Hindway Publication Corporations and many more journals. He has attended
many national and international conferences. He has delivered memorial lectures. He has published many books for UG and PG students, and he has broadcasted a radio program, that is Pune Akashvani, Yuvavani, and Jindyasa. So like there are many broadcast programs he has delivered, and he has visited many countries, Italy, abroad countries, Italy, France, Germany, England, Netherlands, Spain, Sweden, Greece, Hungary, Czech Republic, Australia, Dubai, Turkey. Like he has visited many of abroad countries. So with this biodata, I request Dr. Sharad Pasle sir, please enlighten our participants with your knowledge. Thank you, sir. Over to. Yes. Thank you, Konda sir. I am audible well? Yes, sir. Okay. Let me start. Thank you. You have introduced very nicely. I would like to thank the KJ Somaiya College for inviting me. I special thanks to all management, those who have encouraged to take this opportunity. Especially thanks to trustee, the honorable secretary, honorable chairman sir. Then the principal, Dr. B.S. Yadav sir, the organizing committee, especially coordinator, Dr. Konda sir, Pagar sir, Dr. Thange sir, my friend Nagre sir. So actually I will not take too much time. Within half hour, I would like to conclude the session. But many of you have in mind, because I was thinking to start in Marathi, but I thought many people, those are from outside state. So I will switch my Hindi and English very well, right? So actually I was thinking, because many of you are in mind, why there is need of IPR, means patents, and also why there is need of entrepreneurship in higher education. So even the students are thinking the same, the teachers are thinking the same. Even many teachers, those who are from commerce side, they are also thinking this is a business of science teacher. So I would like to say something about that, because this is not only the duty of science teacher to file the patent and to become an entrepreneur. So everyone can do it, and how we can do it, that I would like to explain. So my slide is visible right now? Yes, sir. You can see my presentation, right? Okay. Yes. So see, I have given the name where intellectual property right and entrepreneurship need in higher education, right? So in this session, actually I would like to tell you about the IPR, intellectual property right, how it has started in India, then what is law and rights, patent procedure, prosecution, what is the procedure, then what is meant by entrepreneurship. Some examples I will give you. So it is not actually boring, but I will not give any too much theoretical concept, but I would like to give some practical aspects, some examples which is related or which is all around us, so you will be enlightened, right? So see, this is the world map. We'll start from here. And why we have to think about the globally, because इतने दिन तक तो हम पेटेंट के बारे में कभी सोचते नहीं थे, तो अभी ही पेटेंट और या एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत क्या है? इतना अच्छा हमारा चल रहा था, फिर भी इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, पूरी गौर से अगर हम लोग देखते हैं, अगर एक 19th सेंचुरी की अगर हम लोग बात करते हैं, so this is belongs to Europe, right? This circle is belongs to Europe, and in Europe almost 27 countries are there. Right, the arrow which is pointed, which is UK, means our England, then here is the Italy, then Switzerland, then Germany, then Netherlands, France, means almost all developed countries are there in this Europe, right? But size of the developed countries is very small compared to the India, right? So even they are very small, even these countries having the population is very less, why they have developed, right? So this fact, so what is the fact actually? So the fact, we have to find that fact
and then only we can able to implement in our country, right? That's why we have to think globally. Even if you have opened any science book or any, I can say, the old theory or any definition, you can find few names of scientists. They are belongs to Greece, they are belongs to Germany, they are belongs to France, they are belongs to UK, right? None of them from, or very few of them from India or other countries, right? Because at that time they have started to thinking about the innovation, right? उन्होंने कुछ तो नया किया था, इसीलिए हम लोग उनका नाम अभी भी साइंटिफिक फील्ड में हो, किसी भी बुक में हो, किसी डेफिनेशन में हम लोग यूज करते हैं. अगर ये 19वीं सेंचुरी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा नोबेल लॉरेट कहाँ है, तो ऑल ओवर यूरोप से ही, ठीक है. और यूरोप के लोगों से दो और कंट्री जो इंस्पायर हो गए. और 20वीं सेंचुरी में, मतलब लास्ट सेंचुरी में अगर किसी ने अगर नोबेल प्राइज में हिस्सा लिया है तो दीज आर द टू कंट्रीज. एक रहेगा अमेरिका और दूसरा रहेगा जापान, ठीक है. और जापान और अमेरिका ने ये यूरोप से थोड़ा मोटिवेट हो गए और उन्होंने क्या किया, नोबेल प्राइज उन्होंने मेरा दिया, ठीक है. अब पूरा वर्ल्ड ऐसा कहता है कि नाउ इज द टाइम इन 21st सेंचुरी, राइट. So India and China, Arvind, in 21st century, India and China will become a power. What do you think? अगर हम अपने आजू बाजू में देखते तो सबको लगेगा यार होना तो चाहिए, लेकिन अपना एनवायरमेंट, हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, इतना टाइम नहीं है, हमारे टारगेट अलग अलग है, कैसे हो पाएगा, थोड़ा नेगेटिव माइंड में आ जाता है. लेकिन अगर पूरा वर्ल्ड ऐसे कहता है कि इंडिया के पास टैलेंट है, इंडिया के पास ह्यूमन पावर है, सब कुछ है, तो वी हैव टू थिंक. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेना पड़ेगा. और हमें मतलब कौन है, टीचर और स्टूडेंट्स, राइट. बिकॉज वी आर गोइंग टू लीड दिस 21st सेंचुरी. तो ये कहना तो बहुत इजी है, लेकिन हाउ वी कैन डू दैट, राइट. So we'll think on that way, and I would like to say few examples for that. He is the actually pioneer of our India patent system. What is his name? Sir, can you allow to unmute themselves? Participant can unmute. Yeah. No is this possible? Yes. कौन है ये? Dr. Raghunath Mashelkar. Obviously, this is Dr. Raghunath Mashelkar, and he was actually the director of National Chemical Laboratory Pune, and then he became in 1996. He became Director General of Council of Scientific and Industrial Research, CSIR के डायरेक्टर बन गए, ठीक है. उस समय का एक किस्सा था. किस्सा ऐसे था कि वो अपने क्वार्टर में बैठे थे, उनके माँ के साथ बैठे थे और गार्डन के बाजू में बैठे थे. उसी समय में ये हो गया कि एक बर्ड ऐसे उड़ते उड़ते वहां पे आ गया, लेकिन वो इंजोर था, ठीक है, और गिर गया उनके गार्डन में. गिरने के बाद इमीडिएटली ये दोनों भी अपने चेयर से उठे. माशेलकर सर गए वो बर्ड के पास और उनकी मम्मी गई अंदर घर में. सर को बहुत गुस्सा आ गया, इतना बर्ड मतलब यहाँ पे ऐसे गिरा है और मेरे मम्मी तो अंदर चली गई, ऐसे कैसे हो गया, ठीक है. तो वो क्षण भर के लिए वो थोड़ा गुस्सा हो गए थे, लेकिन उन्होंने देखा वो सिर्फ वो बर्ड को मतलब ऐसे कर रहे थे थोड़ा ठीक तरीके से. तो इमीडिएटली मदर हैज केम आउटसाइड विथ मसाला बॉक्स, ठीक है, मतलब अपने किचन में जो मसाला बॉक्स होता है ना, वो मसाला बॉक्स लेके आ गई. इसके अंदर थी हल्दी, और वो हल्दी उन्होंने क्या किया, वो बर्ड का जो जहाँ पे जख्म था, जख्म भरने के लिए उन्होंने वो हल्दी लगा दी. किसने? सर के माँ ने. सरप्राइजिंगली विद इन 2 मिनट बर्ड थोड़ा अच्छा फीलिंग कर रहा था, और अगले 5 मिनट के अंदर वो बर्ड खुद उड़ के चला गया.
सर के माइंड में आया मुझे तो इतना डॉक्टरेट मिला है, मैं अभी डीजी बन गया हूँ, मतलब पूरे इंडिया को मैं लीड कर रहा हूँ, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज ने मुझे डॉक्टरेट भी दी है, मतलब डिलीट भी मुझे मिली है वगैरह वगैरह। तो सर खुद को बहुत प्राउड फील करते थे। लेकिन सर ने बोला यार मुझे क्यों नहीं समझ में आया कि इसको हल्दी लगाएंगे और ये उड़ जाएगा, मेरी मम्मी को कैसे समझ में आ गया। देन ही स्टार्टेड टू थिंकिंग एट दैट पॉइंट एंड ही रियलाइज दैट मम्मी, मतलब मम्मी उनके कभी स्कूल पे गई नहीं थी, फिर भी मम्मी को कैसे पता कि हल्दी के अंदर ये मेडिसिनल प्रॉपर्टी है और ये उसको लगाने के बाद ये ठीक हो जाएगी। तब सर ने थोड़ा सर्च करना शुरू किया, उन्होंने उसके पीछे एक टीम लगा दी और ऐसे ध्यान में आ गया कि उसके सिर्फ 2 साल पहले ही अमेरिका ने हल्दी का पेटेंट ले लिया था। ये पेटेंट क्या होता है अब मैक्सिमम लोगों को पता है, फिर भी अगर किसी को नहीं पता है तो इसको मराठी में स्वामित्व बोलते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी अगर मैंने कुछ चीज की है और दूसरा कोई बोलेगा नहीं वो मैंने किया तो हमें गुस्सा आ जाता है। सेम वैसे मतलब हल्दी की मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, इनकी मम्मी जो ऑलरेडी बुजुर्ग थी उनको उसकी मम्मी ने बोला था, उसको उसकी मम्मी ने बोला था। मतलब ये पूरे मतलब पिछले कितने सालों से ये चलते आ रहा है कि हल्दी में मेडिसिनल प्रॉपर्टी है और इंडिया इज यूजिंग इट, राइट। हम खाने में भी कौन सी भी सब्जी बिना हल्दी के हम लोग बनाते नहीं, क्योंकि वी नो द मेडिसिनल प्रॉपर्टी ऑफ दैट टर्मरिक, राइट। तो ये सब तो हो रहा था, लेकिन अमेरिका ने कब अराउंड 95 में उसका पेटेंट ले लिया था। तो देन ही स्टार्टेड, मतलब ये तो इनका पावर बहुत अच्छा था, इसलिए उन्होंने अमेरिका के साथ वॉर करना शुरू किया। और ये कैसा वॉर था? लॉजिकल वॉर था, जैसे पेटेंट वॉर इसको बोलेंगे। और पेटेंट 3, 4, 5 साल पूरा वो हायरिंग उसका होने के बाद इंडिया ने वो पेटेंट जीता। मतलब अमेरिका ने मान लिया ठीक है, हमें बाद में पता चला, इंडिया को इसकी पहले पता था। लेकिन ये वार करना तो इजी हो गया, लेकिन क्यों नहीं इंडिया को पेटेंट मिला? मतलब शुरू से इंडिया ने क्यों इसके बारे में थिंक नहीं किया था? क्योंकि इंडिया के पास वो कुछ चीजें लिखना या पब्लिश करना इसका अवेयरनेस ही नहीं था। और उसके बाद ये जो शुरू हो गया यहाँ से वार, मतलब यही पेटेंट वाज promptly challenged by Dr. R. A. Mashelkar, an Indian scientist who has done much to awake India to intellectual property right। मतलब सर ने इतना हंगामा मचा दिया 95 से लेके 2006 तक कि सर का नाम माशेलकर से लेके पेटेंट करो, पेटेंट कर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने बनना शुरू किया। तो इंडिया का पेटेंट वॉर यहाँ से शुरू हो गया, हल्दी का पेटेंट से, ठीक है। तो उसी वजह से सर को अभी तक पद्मश्री मिला है, पद्म भूषण मिला है, पद्म विभूषण भी मिल चुका है, ठीक है। सो ही हैज contributed a lot for that. Then he has started to think about rice patent as well, बासमती का पेटेंट बाद में ले लिया, चपाती का पेटेंट ले लिया। मतलब सब पेटेंट जो थे अमेरिका या यूरोप ने उसके, हम चुराएंगे तो नहीं बोल सकते, लेकिन चुराए थे ऐसे नहीं बोल सकते, लेकिन उन्होंने उसको फाइल किया, ठीक है। लेकिन हमने उसको वापस ले लिया। ये देखो, ये बासमती का जो पेटेंट है 1997 में हमें वापस मिला, ठीक है। देन नीम के बारे में, अब ये नीम का भी आप लोग बहुत महत्व जानते हैं, ठीक है। इसके भी मेडिसिनल यूजेस पता है, लेकिन नीम का पेटेंट लिया था यूरोपियन कमीशन, ठीक है। मतलब यूरोपियन के कौन सी कंट्री ने लीड लिया था मुझे पता नहीं, लेकिन यूरोपियन पेटेंट ऑलरेडी फाइल किसी ने किया था, वो भी वापस ले लिया नीम का पेटेंट। ये इसका भी बहुत दिनों तक इसका बैटल चलता, मतलब ये झगड़ा चलता रहा और बाद में ये भी पेटेंट हमें मिल गया। चपाती के पेटेंट की तो बहुत अच्छी हिस्ट्री है। मतलब चपाती का पेटेंट तो ठीक है किसी ने लिया था, लेकिन उसमें फिर हमें बना के दिखाना पड़ा कि यार आपके पास रोटी बनती होगी, लेकिन हमारी चपाती ऐसी कि उसके अंदर लेयर बनती है, जैसे मांस जैसे बनाती है ना चपाती, उसके अंदर लेयर होती है। तो लोअर की लेयर वाली रोटी कोई फॉरेन कंट्री वाला बना ही नहीं सकता
तो उसको भी पेटेंट हमने फिर वापस ले लिया। तो इतना मतलब डिटेल तरह से ये पेटेंट का वर्क शुरू हो गया था। अब ये पेटेंट की जरूरत क्यों है और हमारे कॉलेज में इसका क्या जरूरत है, ठीक है, या ये नेम का हो गया, बासमती हो गया, बहुत सारे अब हो तो गए, तो अब क्या जरूरत है, ये आपको सवाल पड़ेगा। तो इसके लिए करंट सिनेरियो जो डेटा देखना पड़ेगा। जैसे ये 2007 का डाटा है, चाइना पर ईयर मोर देन 13 लाख पेटेंट फाइल करती है, यूएसए मोर देन 6 लाख, जापान 3 लाख, यूरोपियन पेटेंट ऑफिस मतलब टोटल यूरोपियन कंट्रीज 1,66,000 एंड इंडिया इज नियर बाय 50,000। सो हमारा नंबर तो बहुत कम है, मतलब हमारे पास अभी तक अवेयरनेस नहीं है। अगर बोलते हैं मतलब ग्लोबली अगर ऐसे बोला जाता है कि इंडिया एंड चाइना विल लीड द नेशन और वो वर्ल्ड को अगर लीड करेंगे तो उसके लिए हमें हमारा नंबर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए ये पेटेंट का अवेयरनेस करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एजुकेशन में कहाँ से आ गया, एजुकेशन की कुछ स्टोरी मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे ये एक पेटेंट मतलब ये सबसे अच्छा ऑटोमोबाइल का एक मॉडल माना जाता है, ये नैनो कार वाला। नैनो कार जब बनाई गई थी तो उन्होंने जिस टाइप से बनाई, मतलब उसको सेफ हो या ज्यादा स्पेस हो या उसमें से चीपली मतलब उसको अवेलेबल किया था उसके बारे में हो, या फुट स्पेस उन्होंने बढ़ाया था, या पहली बार इंजन उसका पीछे था और आगे पूरा स्पेस दिया था। तो ये सब जो कंसेप्ट थे ये पूरे कंसेप्ट पेटेंट हो चुके थे। ऑलमोस्ट टाटा नैनो हैज विन 37 पेटेंट्स, ठीक है। मतलब टाटा मोटर ने कितने पेटेंट फाइल किए थे, 37 पेटेंट फाइल किए थे और एक बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल मॉडल एज अ नैनो उन्होंने बनाया था, ठीक है। ये कमर्शियल में आया नहीं या उसके क्या क्या प्रॉब्लम हो गया आप लोगों को पता है, नो डाउट अबाउट। स्वयं नाम का एक क्या बनाया था, सैटेलाइट बनाया था अपने पुणे के एक इंजीनियरिंग कॉलेज ने, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, COEP जिसको बोलते हैं, उन्होंने सिर्फ 1 किलोग्राम वेट वाला ये सैटेलाइट बनाया था और उससे एजुकेशन में बहुत अच्छे बदलाव आए थे, ठीक है। कि इसको संकट मोचक या प्रोमोचक भी इसको बोलते हैं। ये उपग्रह या सैटेलाइट जो बनाया था इसरो की हेल्प से बनाया था, COEP सैटेलाइट फ्रॉम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, इसको स्वयं बोलते हैं, ठीक है। तो इसने भी बहुत अच्छे पेटेंट किए और एक अपना खुद को साबित किया है कि यार हम भी कुछ तो कर सकते हैं, ठीक है। मतलब वर्ल्ड को हम लोगों ने दिखाया है इसके बारे में। अब ये एक एग्जाम्पल है, जैसे आपको लगेगा कि हमारा इसमें क्या है। जैसे समझो मैंने कुछ एक बुक लिखा है और बुक लिखा मैंने उसको पब्लिश किया, लेकिन किसी ने और ने मतलब मेरे ही किसी फ्रेंड ने उस बुक में से डाटा ले लिया और उसके नाम से पब्लिश किया। तो वो पब्लिश तो कर सकता है लेकिन उसका जो कुछ ना कुछ मुझे देना चाहिए, मतलब नॉट इन मनी, उसको साइटेशन बोलते हैं, ठीक है। वो साइटेशन तो मुझे कम से कम देना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं दिया, ठीक है। तब मैं उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकता हूँ, उसको कॉपीराइट बोलते हैं। सेम वैसे जर्नल ऑफ मटेरियल केमिस्ट्री, ये सीमेंट का पेपर है। सीमेंट मतलब एक इंस्टीट्यूट है पुणे में, वहां पे उन्होंने पब्लिश किया था। गलती से उन्होंने एक स्टूडेंट ने पिछले एक रिसर्च पेपर का एक इमेज इसमें डाला था और वो भी किसी ने देख लिया, ठीक है। उनके समझ में आ गया कि ये इमेज यहाँ पे रिलेवेंस नहीं है, दूसरे के किसी पेपर से उसको निकाला गया। तो इनके ऊपर कंप्लेंट आई और वो कंप्लेंट भी पब्लिश हो चुकी है, ठीक है। तो मतलब हम लोग बदनामी है, वैसे हम झूठे हैं ऐसे वर्ल्ड कहता है बहुत बार, ठीक है। मतलब चाइना को तो बहुत हम लोग मतलब इंडियन तो चाइना को मानते नहीं यार, मतलब ये डुप्लीकेट है, इसका मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, ये चाइना मटेरियल है, बराबर है। मतलब चाइना ने ये सब ऑथेंटिसिटी ऑलरेडी वो
खो चुके हैं, लेकिन इंडिया ने ऑथेंटिसिटी को नहीं खोना है, ठीक है। इसीलिए इंडिया नीड नॉलेज ऑफ कॉपीराइट, ठीक है। और ये नॉलेज जो हम लोग लीड करने वाले इन 21 सेंचुरी में, ठीक है, तो हम लोगों को इसका नॉलेज होना जरूरी है, समझ गए। तो पेटेंट एक अलग बात है, कॉपीराइट एक अलग बात है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एजुकेशन फील्ड। वैसे आप लोगों ने कुछ साल पहले देखा होगा मूवी की सीडीज आती थी या डीवीडी बोल, कुछ डीवीडी या सीरीज ऐसे रहती थी, उसका प्राइस रहता था मोर देन सर आवाज आ रही है ठीक से? हाँ सर आ रही है, आवाज आ रही है, स्क्रीन भी दिखाई दे रहे हैं। यस सर। हाँ, यहाँ पे कॉल आ गई इसी लगा, ठीक है। तो एक्चुअली क्या क्या इम्पोर्टेंट है अपने लिए कॉपीराइट में? जैसे मैं सीडी की बात कर रहा था, तो कुछ सीडीज आती थी उसका प्राइस रहता था 200 रुपीज और कुछ सीडीज का प्राइस रहता था 20 रुपीज। अब 200 वाला ओरिजिनल रहता था या 20 रुपीज वाला ओरिजिनल रहता था? हमें तो दोनों में से तो सेम ही दिखाई देता था। फिर 200 वाला क्या था? उसको रियली ओरिजिनल बोलेंगे। अब रियली ओरिजिनल हमें कैसे पता चलेगा? सिर्फ कॉस्टली इसलिए नहीं, एक्चुअली कौन सी भी अगर मूवी या वो पब्लिश करना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, उसका कॉपीराइट लेते हैं, मतलब हम उसकी कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए जिसने कॉपी की वो तो 20 रुपए में भेज रहा है, क्योंकि कॉपी करने वालों को ही पूरा 20 रुपीज मिलने वाले थे। और ये जो 200 रुपए वाले हम लोग परचेस करने वाले थे, उसका कुछ परसेंटेज, उसको रॉयल्टी बोलते हैं, वो रॉयल्टी कहाँ पे जाने वाली थी? जिन्होंने उस मूवी को प्रोड्यूस किया है, जिन्होंने उस मूवी को बनाया है, उनके पास उसका प्राइस जाने वाला था, ठीक है। तो अगर सीडी को भी हम लोग कॉपी करने लगे तो भी कॉपीराइट का मतलब केस हमारे ऊपर आ सकता है, ठीक है। सेम कौन से भी बुक का अगर डाटा लेना है, रिसर्च में तो ये बहुत मायने रखते हैं ये चीजें, इसलिए आप लोगों को ये चीजें पता होना जरूरी है। इसके लिए डिटेल ये आप लोग अभी मूक जो MOOC मासिव ओपन ऑनलाइन कुछ कोर्सेस है, ये कोर्सेस आप लोग घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हो, ताकि इसका पूरा नॉलेज आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। स्टूडेंट्स तो जिनको भी अगर अभी प्लेन BSc या प्लेन कॉमर्स, प्लेन आर्ट्स में आप लोग काम कर रहे हो और फिर भी कंप्यूटर के अंदर एंट्री करना है, कंप्यूटर के अंदर एंट्री मतलब IT फील्ड में अगर काम करना चाहते हो, तो ये पेटेंट और कॉपीराइट का नॉलेज ले लो। नो डाउट देयर आर ह्यूज अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे प्लेसमेंट यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे कि जो आपको जॉब दे सके, ठीक है। अगर जॉब के मायने भी आप रखते हो तो भी इसमें बहुत अच्छा स्कोप है, ठीक है। थर्ड बात है इसके अंदर ट्रेडमार्क की। ट्रेडमार्क क्या होता है? जैसे कोई भी लोगो हो तो लोगो के ऊपर कहीं TM लिखा होता है, R लिखा होता है, ठीक है। और मतलब किसको रजिस्टर किया है, किसको नहीं रजिस्टर किया है। जैसे अपने सोमैया कॉलेज का एक लोगो है, ठीक है, सेम मतलब सोमैया ट्रस्ट का एक लोगो है, कॉलेज का एक लोगो, ठीक है। तो ये लोगो जो है, लोगो को रजिस्टर किया गया है, वही लोगो दूसरा कोई जिसका सरनेम सोमैया है वो नहीं यूज कर सकता, ठीक है। अगर उसने कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे हम लोग अभी रिलायंस का लोगो यूज कर सकते हैं क्या? रिलायंस का नाम भी नहीं यूज कर सकते। समझो मुझे ट्यूशन सेंटर खोलना है, मैंने खोल दिया रिलायंस कोचिंग सेंटर, नहीं चलेगा। रिलायंस वाले इमीडिएटली आपको कंप्लेंट करेंगे, आपको रिलायंस नाम हटाना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि रिलायंस नाम का ट्रेडमार्क ये रिलायंस कंपनी ने लिया है, उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ट्रेडमार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इन लोगो और ट्रेडमार्क को ठीक तरह से देखो। अगर आप अनम्यूट कर सकते हो तो मुझे बताओ ये पहला लोगो किसका है? एंड्रॉइड। वेरी गुड। चलो हम मतलब कोपरगांव का भी यही करेंगे, सर्वे करेंगे थोड़ा। ये सेकंड है एप्पल का, थर्ड मैकडोनल्ड, वेरी गुड। फोर्थ विंडोज, विंडोज, फिफ्थ
देखो ये यहाँ पे नाशिकमध्ये पण नाही, कुठंच नाही बरं का. हे काय बोलायला माहितीये का, कोविड आहे ना मायनूट शेल कोका कोला सर ने ठीक कहा है, सेल ऑयल का ये लोगो है, मेरा कर्सर दिखता है ना आपको, सेल ऑयल का ये लोगो है, सेकंड रो में हम जा रहे हैं। फिर ये कौन सा है, ये अमेरिका का चैनल है, न्यूज चैनल उसका है, ये आता प्राइमरी ये ओलंपिक्स का है, ठीक है, ओलंपिक्स का लोगो है। फिर ये टारगेट का लोगो है, मर्सिडीज का लोगो है। मतलब हम लोग लोगों से इमीडिएटली पहचानते हैं कि दिस इज बिलोंग्स टू दिस, ठीक है। मतलब ये लोगो, अगर मर्सिडीज का लोगो हम नहीं यूज कर सकते, या नाइके का लोगो हम नहीं यूज कर सकते, मिकी माउस का लोगो हम नहीं यूज कर सकते, क्योंकि उसको किसी ने ऑलरेडी रजिस्टर करके रखा, ठीक है। तो दिस रजिस्ट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग भी कोई लोगो यूज करते हो, कोई इंस्टीट्यूट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या कोई शॉप के लिए, तो इमीडिएटली रजिस्टर दिस लोगो एज अ ट्रेडमार्क, सो यू विल गेट बेनिफिशियल इन फ्यूचर, ठीक है। आपने इतना इन्वेस्ट किया होता है मार्केटिंग के ऊपर, और कोई आपका लोगो ले ले, ये तो अच्छी बात है, ठीक है। सर आप अब म्यूट कर सकते हो सब, ठीक है। फिर ये पैटर्न का प्रोसेस कितना होता है, थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है, ठीक है। पैटर्न में मतलब पहले जो भी आपके मन में आता है उसको आप पब्लिश करना चाहते हो, तो उसको उसमें लिखना पड़ता है, फिर उसको एग्जामिन करते हैं, उसका रिस्पॉन्स आने में ही कम से कम 2 साल लगते हैं पेटेंट ऑफिस से। फिर कुछ अमेंडमेंट मतलब होता है ऐसे कि समझो मैंने किया कि एक माउस का डिजाइन किया, ये कीबोर्ड माउस वाला माउस का मैंने डिजाइन किया है, तो लेकिन माउस का डिजाइन तो बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, तो मुझे तो लगता है कि मैंने ये किया है, लेकिन पहले वाला जिसने माउस का किया है उसका या उसका ऑफिस मुझे अपोज करेगा, वो बोलेगा कि यार ये आपने किया है लेकिन पहले का और आपका सिमिलर ही है, तो मुझे प्रूफ देना पड़ेगा, नहीं है मैंने डिजाइन किया है। लेकिन अगर वो पहले वाला और मेरा सेम ही आ रहा है तो मुझे पेटेंट नहीं मिलेगा। तो मुझे पहले का लिटरेचर देख के मुझे चेंज करना पड़ेगा कि उसमें ये कंसेप्ट था, मैंने इसमें एडिशन ये कर दिया है, ये इसका बेनिफिट है, तभी मेरा भी पेटेंट फाइल हो सकता है, इसको कॉम्प्लायंस बोलेंगे। और छठी प्रोसेस जो है फिर उसका ग्रांट हो जाएगा। सिर्फ ग्रांट पेटेंट हो गया तो ये 2 साल के लिए 3 साल के लिए ग्रांट होता है, उसका रिन्यूअल भी लेना पड़ेगा, मतलब पेटेंट एक्सपायर भी हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पैरासिटामोल एक टैबलेट मतलब ड्रग्स है, ठीक है, फीवर आने के बाद हम लोग लेते हैं। पैरासिटामोल टैबलेट की कॉस्ट जो है वो लेस देन 1 रुपये है, ठीक है, या इवन लेस देन दैट, ठीक है। लेकिन पैरासिटामोल टैबलेट 20 साल पहले किसी कंपनी ने जो बनाया था उनको ही उसकी रॉयल्टी जाती थी, उस समय वो बहुत महंगा था। अब पैरासिटामोल कोई भी बना सकता है, तो उसका पेटेंट कितने साल का था, 20 साल का था, अब कोई भी बना सकता है। वैसे नया कोई ड्रग आता है, समझो कैंसर का ड्रग अभी कौन सी कंपनी ने बनाया, बहुत सारा रिसर्च करके बनाया, तो वो ड्रग कोई भी कंपनी नहीं बना सकती, बराबर। तो 20 साल के बाद बनाएगी, तो ये पेटेंट का जो जितना समय है वो है मैक्सिमम 20 साल तक, ठीक है। उसके बाद वो रिन्यू करके भी कोई फायदा नहीं, वो ओपन हो जाता है। ये पूरा हो गया पेटेंट के बारे में और पेटेंट का प्रोसीजर होगा, ठीक है। उसका क्रिएशन कैसे होता है, ह्यूमन माइंड से आता है वगैरह वगैरह, मतलब ये सब थ्योरेटिकल है। मुझे जो आपको बोलना था कि पेटेंट जो होता है जिसको आईपीआर हम लोग बोलते हैं, ये कोई भी कर सकता है, कैसे कर सकता है उसके एग्जाम्पल मैं आगे देने वाला हूँ। फिर कॉपीराइट जो है, जो वेरी क्लोज टू आवर एजुकेशन, हम लोग बुक लिखते हैं, इवन हमने समझो क्वेश्चन पेपर कुछ निकाले, क्वेश्चंस कुछ निकाले, उसका भी हम लोग कॉपीराइट ले सकते हैं। मतलब मैं आज थर्मोडायनामिक्स पढ़ा रहा हूँ और थर्मोडायनामिक्स में कुछ मैंने 10 क्वेश्चन मैंने खुद तैयार किए, तो उसका मैं कॉपीराइट ले सकता हूँ
ताकि सेम क्वेश्चंस कोई ना कॉपी कर सके। ठीक है, उसके लिए भी कुछ प्रोसीजर है। ये प्रोसीजर के लिए पेटेंट का लॉ सीखना बहुत जरूरी है। और मैंने अभी आपको बोला कि ऑनलाइन भी आप लोग ये सीख सकते हो, उसका पेटेंट एजेंट बोलते हैं, आप लोग पेटेंट एजेंट बन सकते हैं। ठीक है, सेम फॉर ट्रेडमार्क एज वेल। देन हाँ, जो मैंने शुरू में बात की थी कि ऐसे लगता है कि ये तो सब चीजें साइंस वालों में करना चाहिए, कॉमर्स वालों में नहीं, आर्ट्स वालों में नहीं। एक्चुअली ये बुलेट ट्रेन के डिजाइन का एक पेटेंट था। मतलब बुलेट ट्रेन सबसे पहले लिया था, मतलब शुरू हो गई थी जापान में। तो जापान में जब ये शुरू हो रही थी तब उसका ट्रायल फेल हो रहा था। क्यों फेल हो रहा था? क्योंकि बुलेट ट्रेन मतलब फास्ट चलने वाली ट्रेन एट दैट टाइम 200 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा उसका स्पीड था। लेकिन कोई भी अगर मतलब ये बोगदा क्या बोलते हैं इसको, टनल में जब जाती थी, ठीक है, टनल में जब जाती थी वो ट्रेन उतने स्पीड वाले, तो फाट के आवाज आता था ऐसे। ठीक है, मतलब बहुत अच्छी चलती थी, टनल अगर आ जाता है तो आवाज आ जाता था। तो वो आवाज क्यों आता था उसका रीजन ही नहीं समझ में आता। तो बहुत सारे स्पेसिफिकेशन बहुत इंजीनियर ने किया। उन्होंने, जापान ने कोलैबोरेशन अमेरिका से किया, उसके लिए ऑस्ट्रेलिया से कोलैबोरेशन किया, तीनों कंट्रीज के साइंटिस्ट या रशिया के भी कुछ साइंटिस्ट, उन्होंने भी उसके ऊपर काम किया, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो चुका। उसमें 2 साल 3 साल 4 साल चले गए और वो जो उसका मैनेजर था वो बहुत परेशान रहता था। ठीक है, तो परेशानी की वजह से उसके जो फ्रेंड था, एक फोटोग्राफर था, उसको बोला उन्होंने कि यार बहुत परेशानी चल रही है, हमारा प्रोजेक्ट ही सक्सेस नहीं हो रहा है, पूरा कंप्लीट है लेकिन वो टनल में आने के बाद लेकिन आवाज आ जाता है, पता है। तो वो जो फोटोग्राफर था, फोटोग्राफर को एक आइडिया आ गया। फोटोग्राफर ने इमेजिन किया कि ओपन एनवायरनमेंट में बुलेट ट्रेन अच्छी चलती है और जहाँ पे टनल होता है, मतलब क्लोज एनवायरनमेंट, डेंस एनवायरनमेंट जहाँ पे होता है, तब उसका आवाज आ जाता है। तो ऐसा कौन सा, मतलब नेचर में कौन सी ऐसी चीज है जो ओपन एनवायरनमेंट में से क्लोज एनवायरनमेंट में या डेंस एनवायरनमेंट में चली जाती है और आवाज बिल्कुल नहीं करती है। तो फोटोग्राफर को एक आइडिया आ गई और उसने उसको बताया, और वो था किंगफिशर। किंगफिशर नाम का बर्ड आप लोग जानते हो, जिसका शेप आपको पता है इस टाइप सा होता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप ठीक से। ठीक है, वो किंगफिशर क्या करता है, ऐसे पानी के ऊपर घूमता रहता है और अचानक से उसको जब फिश नीचे दिखता है तो एकदम जोर से वो पानी में डुबकी लगा देता है। अगर पानी में डुबकी लगाते समय, पानी में गिरते समय अगर उसने फाट के से आवाज आ गया तो नीचे फिश चुप बैठेगा क्या? बिल्कुल नहीं। मतलब किंगफिशर तो उतने ही स्पीड से पानी में जा रहा है लेकिन आवाज होने नहीं देता है। तो क्यों नहीं आवाज होने देता है? तो उसका रीजन पता चला कि किंगफिशर के ये जो बीक है और उसका हेड है, उसका जो शेप बनाया है वो शेप बहुत परफेक्ट है। और उसी किंगफिशर के फेस का और बीक का जो शेप है, वो शेप उन्होंने बुलेट ट्रेन को दे दिया और उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मतलब बुलेट ट्रेन को बनाया, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन सब इंजीनियर ने बनाया, बहुत सारे साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया, बहुत सारे कंट्री के साइंटिस्ट ने लगाया, लेकिन जो प्रॉब्लम आ रहा था, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन किसने दिया? एक फोटोग्राफर ने दिया। और ऑब्वियसली फोटोग्राफर का बैकग्राउंड क्या है, वो साइंस का था, आर्ट्स का था, कॉमर्स का था, इंजीनियरिंग का था, कोई मतलब नहीं, बराबर है। उसने जो लॉजिक लगाया इसको बोलते हैं इन्वेंशन। नया कुछ तो करने का तरीका या नया कुछ तो डेवलप करने का तरीका जो उसने बनाया वो बहुत सही था, उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। वैसे ही जिंदगी में आप डेली कुछ ना कुछ ऐसे जुगाड़ बनाते हो। इंडिया में जुगाड़ ये वर्ड थोड़ा मतलब लो क्वालिटी का लगता है, ठीक है, लेकिन ये जुगाड़ में इतनी अच्छी ताकत है कि जुगाड़ को भी हम लोग एज अ पेटेंट कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे जुगाड़
रूरल एरिया में सबसे ज्यादा रहते हैं, क्योंकि हमें जब भी लगता है कि यार मुझे प्रॉब्लम है, तभी हम लोग सोल्यूशन देंगे और अच्छा बनेगा। जैसे हम लोग अभी सैक यूज करते थे, मैं जब स्कूल जाता था तब सैक थी नहीं, हम क्या करते थे उस समय पैसे हाथ में बैग लेके जाते थे, बराबर। बहुत सारे टीचर भी मुझसे एग्री होंगे। हम लोग क्या यूज करते थे, हाथ में थैली थे हमारे, अगर बाइसिकल पे भी जाते तो हम हैंडल पे लगाते थे और वैसे ही चलते थे। लेकिन हम कभी हमारा जो दफ्तर है, दफ्तर कभी पीठ पे हमने कभी नहीं रखा, बराबर है, क्योंकि उस टाइप का लॉजिक है हमारे पास नहीं था। आप देखो मतलब कितना प्रॉब्लम होता था, एक हाथ में बैग एक हाथ में बॉटल, बहुत प्रॉब्लम रहता था उस समय। हाँ, तो आप देखो आराम से आप लोग बैग लगाते हो, मतलब सैक में बैग में भी इनोवेशन आ गया, लेकिन हम लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं हुए। तो अब ये इन्वॉल्व होने की जरूरत है। हमारे आजू बाजू में जहां जहां प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को जो सॉल्व करेगा उसका पेटेंट बनेगा, उसका ट्रेडमार्क बनेगा, उसका कॉपीराइट बनेगा और वही स्ट्रीम में इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो नेशन बिल्डिंग ये जो कंसेप्ट है, नेशन बिल्डिंग में वी कैन इन्वॉल्व इट वेरी वेल। ये इन्वेंशन और इनोवेशन का एक ही एग्जांपल दे देता हूं। जैसे लाइट का मतलब थॉमस एडिसन ने क्या किया, फर्स्ट टाइम बल्ब बनाया। ठीक है, सो थॉमस एडिसन ने फर्स्ट टाइम बनाया, बराबर है, बल्ब बनाया, तो वो हो गया इन्वेंशन। बल्ब का इन्वेंशन थॉमस एडिसन ने किया, बराबर है। लेकिन ट्यूब का किसने किया, सीएफएल का किसने किया, पता नहीं। एलईडी का किसने किया, पता नहीं। मतलब जो थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाया वही बल्ब अभी तक हम लोग यूज कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। तो उसको किसी ने तो इनोवेट किया, इनोवेशन, समझ गए। मतलब उसमें अभी मतलब डिपेंड ऑन सिचुएशन, उसमें ऐसे चेंजेस किए कि दैट क्रिएट सम इनोवेशन। ठीक है, मतलब बल्ब से लेके सीएफएल तक, सीएफएल से लेके ट्यूब तक, ट्यूब से लेके एलईडी तक, बहुत सारे जितने बदलाव हो गए, ये बदलाव को बोलते हैं इनोवेशन। जैसे स्टीव जॉब्स को बोला जाता है, स्टीव जॉब्स ने मोबाइल की मतलब खोज की है क्या, नहीं। मतलब टेलीफोन किसने बनाया, ग्राहम बेल ने। तो टेलीफोन को वायरलेस किसी और ने बनाया, बराबर। वायरलेस को छोटा किसी ने और ने बनाया, या छोटे को फिर और छोटा और ज्यादा मतलब उसमें फैसिलिटी वाला स्टीव जॉब ने बना दिया, बराबर। तो स्टीव जॉब इज इनोवेटर, बराबर है। ये इन्वेंशन हो गया, इनोवेशन हो गया, और इसको अपने तक मतलब हमारे तरफ लाने वाले जितने कंपनीज हैं, वो कंपनीज को हम इंक्यूबेशन पे बोलते हैं। ठीक है, कंपनीज को क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन। जैसे बल्ब किसी एक ने इन्वेंट किया, थॉमस एडिसन ने। ट्यूब को, सीएफएल को, एलईडी को किसी ने इनोवेट किया, वो सब साइंटिस्ट थे। और हमारे पास लेके आने वाला फिलिप्स है, विप्रो है, या सैमसंग है, जितने सब मतलब कंपनीज है, कंपनी हमारे पास लेके आई, कंपनी को इंक्यूबेशन बोलते हैं, समझ गए। तो ये 3 टर्म भी मुझे आपको बोलना था। अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाता हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो एंटरप्रेन्योर, ये तो प्रोनाउंसिएशन ही इसका बहुत डिफिकल्ट रहता था। मैं भी इसको एंटरप्रेन्योर वगैरह ऐसे कुछ तो बोलता था। लेकिन एक वर्कशॉप मैंने अटेंड किया, उसमें मुझे एक सर ने बोल दिया, आपको संतरा पता है, संतरा? हाँ, तो बोलो संतरा, संतरा। मैं बोलता रहा, उन्होंने बोला आप बोलो आंत्र। बहुत इजी गया है, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। मतलब बिजनेस और एंटरप्रेन्योर में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। बिजनेस किसको कहते हैं, जो पापा से लेके अभी तक चल रहे हैं, पापा गुजर गए, आप पापा की जगह पे हम बैठ गए, चल रहे हैं, बिजनेस, खुद के लिए कुछ ना कुछ करना। अब एंटरप्रेन्योर क्या कंसेप्ट है, बिजनेस ही है लेकिन थोड़ा अलग तरफ से, थोड़ा इनोवेशन है इसके अंदर, इसमें थोड़ी रिस्क है, इसमें लोगों को इन्वॉल्व करने की कैपेसिटी है। इसको ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग मैंने बोला। फ्रेम द चैलेंज, मतलब इसको बिठाना थोड़ा चैलेंजिंग भी है।
और इसके लिए कमिटमेंट करने की जरूरत है। ये सब जिसमें आ जाता है इसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। अब कौन है एंटरप्रेन्योर? कोपरगाव में येवले चहा आलाय का? हो आला नाही सर. हाँ का प्रेमाचा चहा आलाय? यस सर, नाही, आहे. हाँ मतलब सब टाइप के टी आप लोगों ने देखा है, बराबर। तो चाय पहले से बनती थी। चाय तो चाइनीज ने कब 2000 साल पहले बनाई, ठीक है। लेकिन चाय बनाने का तरीका दूध से मिला के किसी ने बनाया, इंडियन ने बनाया। लेकिन भेजने का तरीका अब येवले चहा, प्रेमाचा चहा और उप सरपंच चहा, सरपंच चहा या कितने ब्रांड है मुझे पता नहीं, ठीक है। ये सब क्या है, उन्होंने खुद का एक फॉर्मूला बनाया। वो फॉर्मूला बना के सिर्फ एक स्टॉल लगा के नहीं बैठे, समझ लो। वही फॉर्मूला उन्होंने उनके फ्रेंड को पहले दे दिया, यार मैं फॉर्मूला देता हूँ, तू वहां पे सिर्फ बैठने का काम, ठीक है। तो वो फ्रेंड भी खुद को कमाने लगा। फिर उस फ्रेंड को अच्छा चलने लगा तो उसने बोला देख उसका चलने लगा, तू क्या कर रहा है बैठ के, चल तू भी ये फॉर्मूला ले ले। तो उसका फ्रेंचाइज मॉडल डेवलप हो गया, फ्रेंचाइजीज मॉडल। तो चाय बनाने का तरीका पहले से आ रहा है, पीने वाले लोग वहीं पे है, फिर भी ये फ्रेंचाइजीज का जो तरीका है इसको इनोवेशन बोलते हैं। और जिन्होंने निकाला मतलब येवले चाय वाला, ये नाउ हैज बिकम एन एंटरप्रेन्योर। वो डेली, मैं पर्सनली उनको जानता हूँ येवले चाय वालों को, कि वो अभी काम नहीं करता है, वो डेली कौन से ना कौन से सिटी में जाके बस इनॉग्रेशन करता है। लेकिन जिसने भी वो येवले चाय का ब्रांच खोला है, मतलब येवले का मैं ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ, मुझे बस ये एंटरप्रेन्योर का कंसेप्ट बताना है, ठीक है। कि मतलब वो अभी खुद काम भी नहीं करता है, फिर भी वो डेली कमाता है, और उसने कितने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिलाया है, ठीक है। मतलब जिसने भी ब्रांच खोली है वो बोलता है कि सर वो चाय बनाने वाला मुझे एक बंदा चाहिए आपका, मैं बर्तन तो साफ करूंगा या किससे करवा के ले लेता हूँ, या मैं सर्व करने के लिए किसी को रख लेता हूँ। मतलब 3-4 लोगों को एक ब्रांच में कम से कम 3-4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। तो खुद भी जियो, दूसरों को भी जीने दो, ठीक है, और उससे पैसा भी कमाओ। तो इसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। और येवले चाय को खुद को इन्वेस्ट कितनी करनी पड़ेगी? अब टर्नओवर तो उसका करोड़ों में है मुझे पता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट कितना रहा होगा? बहुत ही कम। उसने खुद एक स्टॉल लगाया था, दैट्स इट। लेकिन उसके माइंड में जो आया कि मैं खुद ही क्यों कमाऊं, मेरे फ्रेंड को भी मैं कमाना सिखाता हूँ। ये जो एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड जो वर्किंग कल्चर, ये हमें एक दूसरे में बनाना है, ठीक है। और ये सब पॉसिबल है कॉलेज के एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो आप लोग जितने कॉलेज में हो, नो डाउट कि सिर्फ बुक पढ़ने से या सिर्फ एग्जाम देने से नहीं, ये आपके ग्रुप में काम करने की कैपेसिटी, नेशन बिल्डिंग में हमारा कुछ ना कुछ होना चाहिए, ये सोचना जरूरी है। मैं और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे ये यंग एंटरप्रेन्योर है, इसका नाम है रितेश अग्रवाल। इसने खोला है पहले ओयो ब्रांड, आप लोगों को अभी पता है, ठीक है। ये क्या है ओयो ब्रांड? पता तो है आप लोगों को कि ये होटल के सामने लगाया जाता है, ठीक है। मतलब कौन सा, समझो सिंहगढ़ होटल है, ठीक है, सिंहगढ़ के नीचे ओयो सिंहगढ़ ऐसे लगाते हैं बस। तो क्या हो जाता है, सिंहगढ़ होटल का पूरा डाटा ओयो के ऐप में चला जाता है। बिलीव मी, ये ओयो का, ये रितेश अग्रवाल का एक भी होटल नहीं है, एक भी होटल नहीं है। लेकिन अब ये रितेश अग्रवाल के लगभग 30 कंट्री में, 30 कंट्री में इसका ओयो का ब्रांचेस है। अब ये रितेश अग्रवाल काम कुछ नहीं करता है, उसका होटल चल रहा है, दूसरे का होटल चल रहा है, और उसकी रॉयल्टी बस रितेश अग्रवाल को मिल रही है। ही इज एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो ऐसे कितने सारे, मतलब जिसको, मतलब ये रितेश अग्रवाल बेंगलोर में किसी कंपनी में काम कर रहा था, गांव आ रहा था और उसको नहीं मिल रहा था, मतलब होटल नहीं मिल रहा था। तो उसको ऐसे लगा कि यार जगह पे भी ऐसे होना चाहिए कि जितने होटल है वैसे एक क्लिक पे आना चाहिए, ठीक है। तो उसने शुरुआत की, वो ऐप डेवलप किया और बन गया एंटरप्रेन्योर।
यहाँ पे एक है तिलक मेहता, ये तो अभी भी 16 साल के 17 साल का है, ठीक है। वो जो 13 इयर्स का था, उसने पापा ने छुट्टी के दिन उसको ऑफिस में बुलवाया, इसको तिलक को। ऐसे बोला कि यार बेटा तिलक, मैं घर पे मेरा एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट भूल के आया, तो प्लीज उसको लेके आया। यार ये तिलक ने तो अभी छुट्टी के दिन क्या किया था, बहुत अच्छे अच्छे प्लान किए थे, आज गेम खेलेंगे बच्चों के साथ, ये करेंगे, मूवी देखेंगे वगैरह, कुछ तो प्लान, पूरा प्लान चौपट हो गया उसका। तो ये तिलक जो था ना, बहुत गुस्सा था उस दिन, और गुस्से में वो समझ रहा था यार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। ये जो बड़े लोग हैं ना, बड़े लोग मतलब बुजुर्ग लोग जितने हैं ना, वो जो भूलने की इनकी बीमारी है ना, उसको थोड़ा ठीक करेंगे। कैसे करेंगे? तो इनका मतलब किसी की भी एम्प्लॉय का घर पे अगर कुछ भूल जाता है तो उसको फिर ऑफिस में लेके जाने का एक सिस्टम बनाएंगे। और मुंबई में पता है कि अगर कोई भी आदमी अगर ऑफिस में चला जाता है तो उसके घर से ऑफिस आने वाला और एक रहता है। कौन रहता है सर, आपको पता है? मुंबई में और एक कोई उसके पीछे से उसका टिफिन लेके आता है। हाँ, वो डब्बे वाले बोलते हैं ना सर, मुंबई का डब्बे वाला, बरोबर। तो ये तिलक मेहता के माइंड में आ गया कि ये मुंबई डब्बे वाले को काम लगाते हैं कि आप लोग टिफिन तो लेके जा रहे हो, टिफिन के साथ ही पार्सल भी लेके जाओ। और इसने पार्सल एंड पार्सल, पेपर एंड पार्सल नाम की कंपनी खुली है 2018 में। बिलियो में ये मतलब बहुत अच्छा टर्नओवर, मोर देन करोड़ों का टर्नओवर यह तिलक मेहता की कर रही है, ठीक है। पेपर एंड पार्सल आप लोग गूगल करो और उसको देखो। ये कितने साल का बच्चा था? 13 ईयर का। मतलब जब भी आपको लगेगा, बहुत सारे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं कि ऐसे कि वो हमेशा बोलते यार मेरे साथ ही ये होना था, सिर्फ मुझे ही ये प्रॉब्लम होता है, दूसरा कोई करता है तो इजीली हो जाता है, मुझे प्रॉब्लम। जब भी आपको लगेगा प्रॉब्लम है में, वहां पे सॉल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा, और वही सॉल्यूशन आपका टर्निंग पॉइंट बनेगा। यू कैन आल्सो बिकम एन एंटरप्रेन्योर। ये प्लास्टिक की रियलिटी आप लोगों को पता है, मुझे इसका बहुत प्रॉब्लम था, लेकिन रिसर्च की वजह से पॉलीमर में काम करने का मुझे मौका मिला। वही प्लास्टिक से प्लास्टिक सीट बनाने का मैंने निश्चय किया। बहुत घूमने के बाद मुझे गुजरात की एक कंपनी, दुबई से एक मुझे सैंपल मिला था इसका, और मैंने इसका सेटअप बना दिया। सेटअप बनाने के बाद ये प्लास्टिक सीट तो अच्छे बन गए, मतलब 100 ईयर तक उसको कुछ नहीं होने वाला है, करोड़ नहीं, कुछ नहीं, पानी से खराब नहीं, कलर दे सकते हैं, कटिंग अच्छे से कर सकते हैं, चिप अवेलेबल, सब कुछ हो रहा था, और वेस्ट से बेस्ट भी हम लोग बना सकते थे। तो मैंने इसका पहले ये टॉयलेट बना दिया। मुझे लगा कि यार टॉयलेट तो गरीबों को नहीं मिल रही, उस टाइम पे बहुत ज्यादा टॉयलेट का प्रॉब्लम चल रहा था, गवर्नमेंट भी उसको प्रमोट कर रही थी। हाँ, तो मैंने सोचा यार सस्ते में हम टॉयलेट देते हैं, तो मैं जगह पे वहां पे फिट करके मैं 10,000 में उस टाइम पे टॉयलेट देता था। लेकिन मेरे भी नैनो बन गई। नैनो बन गई का मतलब क्या है? नैनो को जैसे टाटा नैनो ने तो 37 पेटेंट ले लिए, फिर भी नैनो चले नहीं, उसको बंद करना पड़ा। सेम वैसे मुझे भी इसका टॉयलेट बनाने का काम मुझे बंद करना पड़ा। लेकिन मैंने सोचा कि यार इतना सारा वेस्ट तो है अपने पास, तो क्या करेंगे? तो आई हैव डिसाइडेड टू बिल्ड वन मैरिज हॉल। मैंने एक मंगल कार्यालय खोलने का मतलब निश्चय किया, मैरिज हॉल बनाया, और ये मैरिज हॉल है मैंने 2017 में इसको बनाया। जितना कॉस्टिंग मैरिज हॉल में होना चाहिए उससे कई कम कॉस्टिंग मुझे इससे लगा, ताकि नहीं तो कोई टीचर ये मैरिज हॉल नहीं खोल सकता एक्चुअली, ठीक है। इसमें देखो, एक तो वॉल नहीं है, वॉल ही नहीं है तो खर्चा कम है। अगर कोई वॉल आपको दिखाई दे रहे, जैसे ये फ्रंट है और ये फ्रंट पे ये लगभग 25 फीट का ये वॉल दिखाई दे रहा है, ये वॉल नहीं है, ये प्लास्टिक सीट है, और वो सीट प्लास्टिक, वेस्ट प्लास्टिक से बनाया हुआ है। यहाँ पे स्टेज के पीछे भी आप लोगों को दिखेगा, वो भी ऑलमोस्ट 25 फीट ऊंचा है, ये भी पूरा प्लास्टिक सीट का वॉल, ठीक है। यहाँ पे टेबल दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये टेबल भी पूरे प्लास्टिक सीट के हैं, पूरा सीट ये वेस्ट प्लास्टिक से बना हुआ है। यहाँ पे टेम्पल दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। मतलब हर ये ऐसे मैरिज हॉल के आजू बाजू में हमें टेम्पल
बनाना पड़ता है क्योंकि ये खेत में बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये टेम्पल भी पूरा प्लास्टिक से है। और यहाँ पे जो विजिट किया है, यहाँ पे मेरे सर है डॉक्टर प्रकाश वडगांवकर, जिनके पास मैंने रिसर्च मेरा शुरुआत की थी नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में, ठीक है। उन्होंने भी उसको विजिट करके मुझे अप्रिशिएट किया है। नो डाउट, मतलब ये नया कुछ करने का सोचा, ये बन गया। एक में मुझे सक्सेस नहीं मिला, लेकिन उसी जो अपेस था उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया एंड आई कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर। मतलब मैं टीचर भी हूँ और ये एंटरप्रेन्योर भी बनने का मुझे मौका इस सीट ने मुझे दे दिया, ठीक है। तो आप लोगों को भी अगर आप कुछ जुगाड़ करते हो, नो डाउट आपको भी ऐसे कुछ तो सुझाव मिलेगा। आप लोग यू कैन आल्सो बिकम वन डे एज एन एंटरप्रेन्योर। बहुत सारे एग्जांपल है, सिर्फ 2 एग्जांपल ले लेता हूँ और आई विल स्टॉप हियर। ये देखो, ये कंटेनर आप लोगों मतलब बहुत लोगों के घर में रहेगा, ठीक है। क्या रखते हैं इसके अंदर? कोई ज्वार रखता है, कोई बाजरी रखता है, कोई मेज रखता है, या कुछ भी, मतलब या शुगर रखते हैं, आप लोग इसके अंदर रखते हैं, बराबर। तो कौन से टीम में क्या रखा है, कौन से कंटेनर में क्या रखा है, ये तो नहीं समझ में आता है। तो क्या करते हो आप लोग? उसको खोलते हो, अगर उसको लॉक है तो लॉक भी खोलते हो, उसमें देखते हो कि कितना है। फिर मम्मी पूछती है यार कितना बचा है, तो ऊपर से देखने से पता नहीं चलता नीचे कितना है, ठीक है। तो ये तो प्रॉब्लम था और हर घर में ये प्रॉब्लम है। एक स्टूडेंट ने, ये दीप्ति नाम के स्टूडेंट है, उसको भी ये प्रॉब्लम लगा। दीप्ति ने क्या किया, इस कंटेनर को यहाँ से कट कर दिया, ठीक है, एक विंडो बनाया और ये विंडो को अंदर से प्लास्टिक का मतलब एक शीट लगाया जो ट्रांसपेरेंट था, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट की वजह से क्या होने लगा, अभी देखो कितने भी दूर से देख सकते हैं कि इस कंटेनर के अंदर क्या है। तो मतलब अगर 4 कंटेनर अपने घर में, तो आप लोग दूर से बोल सकते हैं कि इसमें मक्का है, इसमें ज्वारी है, इसमें बाजरी है, या जो भी आप रखोगे वो इसके अंदर रहेगा। और उसने और एक इनोवेशन किया, क्या किया, उसके ऊपर लेबल किया। लेबल ऐसे कि यहाँ तक है तो 10 kg, यहाँ तक है तो 15 kg, यहाँ तक है तो 20 kg, मतलब कितना अभी बाकी है ये भी समझ में आ रहा। देखो मुझे अब आंसर दे दो कि दीप्ति ने किस PhD हासिल की है, दीप्ति ने साइंस में एडमिशन लिया है, दीप्ति को बहुत सारा फंडिंग है, मतलब क्या है दीप्ति के पास इसमें से? कुछ नहीं। दीप्ति ने क्या किया है, बस अलग तरीके सोचने का तरीका है दीप्ति, बराबर। जो दीप्ति का प्रॉब्लम था उसको सॉल्व करने का उसने सोचा है, ठीक है, छोड़ नहीं दिया। मुझे प्रॉब्लम हो रहा है ना, उसको मैं सॉल्व करूंगा। ये एटीट्यूड बस आपके पास चाहिए, और ये एटीट्यूड हर बच्चे में रहता है, हर स्टूडेंट में रहता है, हर एज में रहता है। ताकि मुझे तो लगता है हम बूढ़े लोगों में थोड़ा कम रहता है, ठीक है, हम लोग बोलते चलो जाने दो, लेकिन स्टूडेंट्स, द यंगेस्ट माइंड, यस, तो यंग माइंड दे हैव वेरी शार्प एन आइडियाज, ठीक है। तो बहुत सारे आइडियाज आपको मिलेगी। ये एक देता हूँ, बहुत अच्छा है। ये अरविंद नाम का स्टूडेंट है। आज तक आप लोगों ने प्रिंटर बहुत देखे हैं, लेकिन प्रिंटर कैसे होता है, ब्लैंक पेज प्रिंटर के अंदर डाल दो, जो मैटर आपका है उसको प्रिंट करो, वही प्रिंटर आज तक देखा है। अरविंद ने एक ऐसा प्रिंटर बनाया, मतलब सेम प्रिंटर था, बस उसने ऐसे आइडिया लगाया कि प्रिंटेड पेपर प्रिंटर के अंदर डाल दो, वेस्ट पेपर समझो, ये अभी वेस्ट है, ठीक है, ये वेस्ट है सब, ठीक है। तो ये वेस्ट पेपर उसने डाल दिया प्रिंटर में, और व्हाइट इंक प्रिंटर से आ रही थी, और उसमें से निकला ब्लैंक पेपर। क्या निकला? ब्लैंक पेपर। अब ये तो पॉसिबल है, किसी ने सोचा है इसके बारे में? किसी में इतने सारे रद्दी बन जाती है अपने कॉलेज में, कितना मतलब ट्रक लेके आना पड़ता है, चलो इसको लेके जाओ लेके जाओ। देखो कितने मतलब जो वेस्ट पेपर जा रहा था, वेस्ट पेपर को रीयूज करने का तरीका यार अरविंद ने अपनाया। सिर्फ उसने क्या किया, वही प्रिंटर, उसी कंपनी का प्रिंटर, बस ब्लैक इंक की जगह उसने व्हाइट इंक डालने का आइडिया डाला, और सब पेपर यूज होना शुरू हो गया, ठीक है बच्चों। बहुत सारे एग्जांपल मेरे पास है,
ऐसे अगर टाइम टू परमिट करेगा, बाद में अगर कोंडा सर या अपना मैनेजमेंट और चांस देता है तो मैं और इनोवेशन पे या साइंस इनोवेशन पे मैं जरूर वहां पे आने की कोशिश करूंगा। जैसे पेन होता है, पेन में चार रिफिल वाला पेन तो हमने आज तक देखा है, ठीक है, लेकिन वही रिफिल को रिप्लेस किया है एक स्टूडेंट ने ऐसे कि एक रिफिल की जगह उसने पेंसिल रखी है, एक टिप में पेन रखा है, एक में हाइलाइटर, एक में स्टाइलस। देखो मतलब पेन एक ही है लेकिन वो मल्टीपर्पज के लिए यूज हो सकता है, ठीक है। तो इसको भी इनोवेशन कहेंगे। बहुत सारे इनोवेशन हमारे भी स्टूडेंट ने किए हैं, ठीक है। आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज माय कॉलेज व्हिच इज ठाकुर कॉलेज ऑफ साइंस कॉमर्स। सो आई वुड लाइक टू थैंक्स टू ऑर्गेनाइजर एंड वेरी सपोर्टिव एंड मतलब जो रिस्पांस देने वाले सब ऑडियंस है या स्टूडेंट्स है, टीचर्स है, सबको मैं थैंक यू करना चाहता हूँ। मुझे पीएचडी के समय पे बहुत घूमने के लिए मिला है। मतलब ये कुछ फोटोग्राफ्स मैं जानबूझ के दे रहा हूँ ताकि कुछ जो स्टूडेंट्स यहाँ पे सुन रहे हो वो समझ पाएंगे कि आप लोग मतलब ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप लोग भी फॉरेन में जा सकते हो। बहुत अच्छी फेलोशिप भी आप लोगों को मिलेगी, बाद में फिर इंडिया में आके सर्व करना, और बहुत अच्छे एनवायरनमेंट बाहर भी होता है। मतलब वी कैन सर्वाइव। ऐसे मत समझो कि आप कोपरगांव रूरल में, सर आप तो मुंबई में थे, ऐसा नहीं था। मैं भी रूरल बैकग्राउंड से आया हूँ। मेरी लैंग्वेज से भी आप लोगों को पता चला होगा ना, इतनी अच्छी इंग्लिश है, हिंदी तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, ठीक है, मराठी भी ठीक ठाक है, मतलब पुनेरी नहीं है, फिर भी काम तो चला था। कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है, करने का जज्बा इम्पोर्टेंट है अपने में, ठीक है, करने की ताकत रखो। यू कैन आल्सो डू इट ऑन बेटर वे, ठीक है। तो आप लोग भी आल्सो यू कैन आल्सो एंजॉय। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आई एम रेडी टू आस्क द आंसर्स। यस, थैंक यू। Students, if anybody interested, I can ask questions. क्राइटेरिया है ना, मुझे लगता है सर किसी क्वेश्चन का मतलब डाउट ही नहीं होता है, बिकॉज यू आर रियली प्रेजेंटेड वेरी वेल एंड वेरी सिंपली एंड वेरी इंफॉर्मेटिव इन ए डिसेंट मैनर सर। तो मुझे लगता है तो आई थिंक इट्स नॉट एनी क्वेरीज फ्रॉम द स्टूडेंट्स। आई होप शरद सर, anybody? Thank you so much, sir, for your energetic and innovative lecture, which was really down to earth and everybody that came to know. Now we are moving towards the last session of this impact lectures. It is vote of thanks. I would like to request respected Dr. N.G. Shinde sir to deliver vote of thanks. Please, N.G. Shinde sir. Thank you, sir. Thank you very much. So on behalf of KJ Somaiya College of Arts, Commerce and Science, as we have arranged the second online session of Impact Lecture Series in associations with Ministry of Education, Innovation Council, AICTE, Government of India. In this lecture series, we have two eminent persons who have delivered enthusiastic and innovative topics lecture. The first lecture was given by Dr. Satya Prakash Mehra sir, who is a founder of International Consortium for Nature Conservation, Rajasthan. And he delivered lectures on environpreneurship, case studies of conservation action for sustainable livelihood. I am very much thankful to Satya Prakash sir for delivering a new aspect which combine the environment and entrepreneurship, and how this amalgamation of these two different fields help environment and
society. So, bottom of my heart, our institution, I would like to thank you, sir, for your this enlightening lecture in this series. And our next resource person, Dr. Sharad Pasale, sir, from Thakur College of Science and Commerce, Mumbai, who also deliver lectures on need of patents and entrepreneurship in education. He also gave a lecture on this patent, copyright, intellectual properties, trademarks, and he also brief us about how these different small things that jugaad, which that we should get patented or copyrighted, so that we will become a progressive countries. Like he explained in this lecture that where we stand in the patent, as well as he also explained about how small ideas can be just innovative one and should be patented, so that we can have the number of patents from our countries. So thank you, sir, Pasale sir, for enlightening us on this small scale ideas. And definitely with this your motivation and enlightened lectures, our students and we also get this opportunity to file a patent, and to that we aware about the patent. Once again, thank you, sir. Thank you very much. Then I am very much thankful to our chief patrons, Honorable Sandeep Romare, Trustee, Kopargaon Taluka Education Society, Honorable Advocate S.D. Kulkarni, Secretary, Kopargaon Taluka Education Society, and Honorable Ashok Rao Romare, Chairman, Kopargaon Taluka Education Society, and Organizing Committee, Dr. B.S. Yadav, Principal, then Dr. V.C. Tange, Coordinator IQAC, Professor S.R. Pagare, Head SIC, Dr. S.G. Konda, Coordinator IIC and IPR. From this or under their guidance, that series is arranged. Again, on behalf of our institution, I would like to thank all the participants, students, teaching and non-teaching staff of our college, as well as all the known and unknown forces who motivate us for this lecture series, and who play their important role for the success of this lecture series. So thank you very much, one and all, for this lecture series. And with this my few words, I will hand over this vote of thanks to the conductor, sir. Thank you very much. Thank you so much, sir. And with the permission of organizing committee and all the dignitaries, I declare here program is over. Thank you so much. Have a nice day to all. Thank you, sir. Once again, Pasle sir and Prakash sir from the KJ Somaiya College. So in the future, we definitely, sir, if offline mode is there, we definitely invite you, sir. Prakash, Mera sir, and as well as Pasle sir. Thank you. Once again, thank you so much, sir, for accepting our invitation and giving the lecture. Thank you. Thank you, Pasle sir. Yes. You can leave the session now. Yes. Thank you.